पाकिस्तान। जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है ये जो सोलर प्लेट्स हैं इन पर डस्ट आपको नज़र आ रहा है। इस डस्ट के साइड इफेक्ट भी होते हैं कि इससे प्लेट्स के जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाते हैं और उनका करंट भी कम हो जाता है, क्योंकि जो सूरज की जो शुआएँ होती हैं वो डायरेक्टली प्लेट्स के साथ अटैच नहीं हो पाती है, जिससे एम्पेयर में फ़र्क आ जाता है। अब इनको वॉश करना है, कैसे वॉश करते हैं इनको, मतलब कैसे साफ़ करते हैं इनको, कैसे क्लीन करते हैं, वो सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए हमारे पास एक वाटर हाई प्रेशर पंप है, जैसा कि अली भाई आपको दिखाएंगे। इसको मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और इसके साथ आज हमने प्लेट्स को वॉश करना है, वो सारी डिटेल। चलो जल्दी से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इसमें पानी इन होगा और इधर से प्रेशर बनेगा और जो गन लगी हुई है इधर से मतलब पानी बाहर निकलेगा। तो अब जो इसका जो वाटर जहाँ जैसा कि आपको वो दूर में नज़र आ रहा है कि वहाँ भी एक प्लेट का सच लगा हुआ है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर आपको पता है कि बिजली का आए दिन इशू रहता है। तो ज़्यादातर भी हमारा जो वाटर प्रेशर हाई वो सेटअप इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको रन करते हैं और all I want,
कि जो एम्पेयर है वो भी बढ़ जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जो आपके प्लेट्स के एम्पेयर से जुड़े हो जाते हैं वो डायरेक्टली वो प्लेट्स तक पहुँच पाती है। तो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है कि प्लेट्स के कलर में भी फ़र्क आ रहा है और जो डस्ट है वो यहाँ पर साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो और मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।